Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students of class 7. How are you all? I'm your English teacher speaking Sir Sohail from VII Education Services Online. I hope that all of you are doing well at your homes in this pandemic. Take very good care of yourselves. Stay home and enjoy your online learning. So today from our online class from VII Education Services, we are going to start our chapter 20 from your English grammar tree, that is vocabulary, and today is session 1 of this topic. So let's start today's class. Yes, students of class 7, so this is your chapter 29 vocabulary of your English grammar tree. We're going to start this lesson today. That is on page number 155. Now let's see what is in this chapter today. That is synonyms and antonyms. So synonyms and antonyms, so there is nothing new in that. We have been learning these things for a very long time, and you have been taught these things for a very long time. So let's continue the further. So let's see what we have to start in today's lesson. Now see the rubric that is given on the top, that blue rubric here. It is about the synonym. A synonym is a word or expression which expresses a meaning similar to that of another word or expression. A synonym is a word or expression which expresses a meaning similar to that of another word or expression. G, class 7. So what is a synonym? As we have read in this definition, or you can say the explanation, कि ये एक ऐसा वर्ड या कोई भी एक इबारत या एक्सप्रेशन होता है, ऐसे वर्ड होता है, लफ्ज़ होता है जिसकी मीनिंग जो है किसी दूसरे वर्ड या दूसरी इबारत से मिलती जुलती हो या सिमिलर हो या सेम हो. मीन्स ये कि वर्ड्स हो सकता है डिफरेंट हो, बट अल्टीमेटली इनकी जो मीनिंग होती है, जो इनके मतलब होते हैं, वो सिमिलर या एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं. So there is an example given here. Inactive, यानी इसका जो सिनोनिम होगा, यानी इसी मीनिंग का जो दूसरा वर्ड हो सकता है inactive का, वो idle हो सकता है. So you can say that synonym for inactive is idle. और इसके दूसरे भी मीनिंग्स हो सकते हैं, जैसे पैसिव है, weary है, listless है, slow है, sleepy, apathetic, lethargic. ठीक है, तो ये जो है इसके मुख्तलिफ सिनोनिम्स हैं. इन अपीयरेंस देयर आर डिफरेंट वर्ड्स तो डिफरेंट है, लेकिन इनकी जो मीनिंग है वो इनएक्टिव के लिए सेम ही होगी. ऑलराइट, तो इसी तरह के मुख्तलिफ सिनोनिम्स हैं जो कि हमने पहले भी पढ़े हैं, एंड यू नो इट वेरी वेल. Now let's see the second rubric, that is about antonym. Now let's see what is the antonym. An antonym is a word or expression which expresses a meaning opposite to that of another word or expression. An antonym is a word or expression which expresses the meaning opposite to that of another word or expression. तो ये जो एंटोनिम्स होते हैं बेसिकली उलट अल्फाज जिनको हम कहते हैं, ठीक है, जिनकी मीनिंग्स अपोजिट होती हैं. जो भी वर्ड गिवन हो या कोई एक्सप्रेशन या इबारत दी गई हो, तो उसके अपोजिट में जो मीनिंग में आ रहा है वो जो है एंटोनिम कहलाते हैं. दैट्स कॉल्ड एंटोनिम्स, वर्ड हैविंग अपोजिट मीनिंग्स. सी द एग्जाम्पल इनएक्टिव, तो यहाँ पर भी वही इनएक्टिव दिया हुआ है, तो उसके ऊपर सिनोनिम्स देख रहे हैं. अब इसके जो अपोजिट्स हो सकते हैं वो एक्टिव हो सकता है, बिजी, वर्किंग, एनर्जेटिक, लाइवली. ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो है इनएक्टिव के डिफरेंट काइंड ऑफ एंटोनिम्स दिए हुए, यानी कि उसके अपोजिट दिए हुए हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट्स रिटन नेक्स्ट हियर. दैट इज when using synonyms and antonyms,
we should use words which belong to the same part of the speech. तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए क्लास के whenever we are using synonyms or antonyms we should be careful that they belong to the same part of the speech, यानी कि उनकी part of speech जो है वो सेम हो. जैसे हमने पढ़ा हुआ है ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस. तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं ये सेम होनी चाहिए जब भी हम सिनोनिम और एंटोनिम्स को यूज करते हैं. Thus, the antonym for difficult can be easy because both are adjective. ठीक है, तो जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर डिफिकल्ट का आप एंटोनिम यूज करना चाह रहे हैं तो वो इजी हो सकता है. तो ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, इट मींस दैट दे बिलोंग टू द सेम पार्ट ऑफ द स्पीच and both are adjective. अच्छा, both are adjective but ease cannot be antonym for difficult because it's a noun. तो आगे इन्होंने अपनी बात जो कंटिन्यू की है इसी सेंटेंस में कि अगर आप डिफिकल्ट का एंटोनिम ईज बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इजी यानी आसानी, ईज भी आसान है, आसानी है, लेकिन बट दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच. ईज जो है ये एक नाउन है और इजी जो है वो एडजेक्टिव है. सो इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड कि वी शुड हैव सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो यहाँ पर उन्होंने यही बात मजीद क्लियर कर दी है कि ईज जो है वो डिफिकल्ट का एंटोनिम नहीं हो सकता. इट कुड नॉट बी द एंटोनिम ऑफ डिफिकल्ट बिकॉज ईज इज अ नाउन एंड डिफिकल्ट इज एन एडजेक्टिव. द अपोजिट इज डिफिकल्टी. ठीक है, तो इसका आप जो है अपोजिट अगर नाउन में लगा रहे हैं तो वो डिफिकल्टी हो सकता है. ईज का अपोजिट डिफिकल्टी. राइट, सो दीज आर सम explanations and little few examples of the synonyms and antonyms. I hope you might have understood easily. There's nothing difficult in that. And in this page you can see the exercise given here. Each group of words below contains synonyms. Underline the odd word. One has been done for you. यानी इसमें आपने क्या करना है कि फॉर एग्जाम्पल लुक एट पॉइंट नंबर 1. यहाँ पर 6 जो है वो दिए हुए हैं वर्ड्स जो कि आपस में एक दूसरे के सिनोनिम है, बट 1 इज ऑड यानी कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, उनकी रेंज में या उनकी मीनिंग्स की में उसमें नहीं आता, तो उसको आपने अंडरलाइन यहाँ पर करना है. राइट, सो दिस वन इज डन फॉर यू. जैसे एरोगेंस है, बोस्टिंग है, वैनिटी है, ह्यूमिलिटी है, ईगोटिज्म है और कंसीट है. तो ये ऑलमोस्ट इसमें जो एक्सेप्ट ह्यूमिलिटी, ठीक है, दे आर द सिनोनिम्स, एक दूसरे के सिनोनिम है. ह्यूमिलिटी जो है वो यहाँ पर डिफरेंट था तो उन्होंने इसको अंडरलाइन करके वो एक्सप्लेन कर दिया है कि दैट डजंट बिलोंग टू द synonym of these words. Right, so next of the words, next of the exercise given, next of the word given in this exercise, you have to do it. So let's solve this exercise on the next slide. Yes, students of class 7, so this is your home assignment, that is exercise A of your chapter 29 vocabulary on page 155. So as we have discussed the first sentence on our previous slide, that has been done for you. So let's continue the exercise here from second point 2, and number 1 you will write in your copy also from the book, and remaining from 2 till 6 we are doing on this slide over here. So 1 you will note down in your copy from the book. As you can see, number 2, the words are obey, comply, observe, ignore, yield and consent. So the one which is different from the synonyms is ignore. On
point number 2. Okay, you will make the table as it is in your book and then underline the odd ones. So in the first one was humility. In the second one it is done here for you, that is ignore. Number 3, harmful, spiteful, vindictive, malignant, benign and destructive. So among these, benign is the odd one. It's underlined. You will do it in your copy. Number 4, hideous, ugly, monstrous, gruesome, delicate and repulsive. These are the words. So among these, delicate is different and it is the odd one. So that's underlined. Number 5, literate, learned, educated, erudite, ignorant and scholarly. So among these, ignorant is the odd one and we have picked it out. That's underlined. And the last one, number 6, that's accept, concede, dispute, admit, confess and grant. So among these, dispute is the odd one. We have picked it out. Right, class 7. So this exercise was quite easy, and you have to also learn the text, English text work from your English text copy. So that's mentioned on your next slide. Yes, students, so this is also your homework along with the homework of the English language, English grammar. You have to do the homework of this English text also. You just have to learn the words and meanings of the chapter number 1 and the dictation list 1 of your midterm. Alright class, so that's all for today. So see you in the next session inshallah. Till then, take good care of yourself. See you. Thank you so much. Allah Hafiz.